Assalamu alaikum everyone. Let's move to the next part of electrochemistry chapter where we will discuss about the variation of molar conductivity of electrolytes upon dilution and Kohlrausch law. In the previous session, I have told you the relationship between conductivity, molar conductivity and concentration. That is, we know that we write the relationship for molar conductivity K and concentration like this, and based on the units we get other relationships like lambda m is equal to K into 1000 divided by C, or lambda m is equal to K divided by C into 1000. Right, now here we can see that molar conductivity is inversely proportional to concentration. Means, with the decrease in the concentration of a given electrolyte, molar conductivity goes on increases, right? And for a given electrolyte, K value will be there, and when you take lower concentration electrolyte, value of K will be less, and when you take higher concentration electrolyte, value of K will be more. Means K upon dilution decreases, whereas lambda m upon dilution increases, राइट जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेंगे उसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो सोल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते जाते हैं तब क्या होता है अपॉन डाइल्यूशन के वैल्यू decreases because number of ions per unit volume also decrease, and upon dilution lambda m increases because more ionization takes place, more number of ions will be produced, right? तो ये रिलेशनशिप याद रखना है. कभी भी देखो आप डाइल्यूशन करते वक्त कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को आप जब डाइल्यूट करेंगे, वाटर ऐड करके, सॉल्वेंट ऐड करके डाइल्यूट करेंगे, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी जो होता है के वैल्यू वो डिक्रीज होगा और लैम्डा एम जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, राइट? Now we'll discuss the same variation of molar conductivity for strong and weak electrolytes, right? So if you take a graph here, we will see the relationship of molar conductivity and concentration, how by change in concentration molar conductivity changes. That can be explained, the relationship between molar conductivity and concentration can be given by an expression, by relationship, by mathematical form, that is given as lambda m is equal to lambda m naught minus a under root of c. We also write it as lambda m is equal to lambda m naught minus a c raised to 1 by 2. This is called as d by Huckel-Onsager equation. D by Huckel-Onsager equation, right? Where lambda m is called as molar conductivity, lambda m naught is called as limiting molar conductivity. लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट है और C जो है कॉन्सेंट्रेशन. इस ओवरऑल इक्वेशन को हम बोलते हैं डी बाय हकल ऑनसागर इक्वेशन, राइट? सो हियर इट इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx plus c, राइट? y, ये इक्वेशन अगर आप रिलेट करेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx प्लस सी. यहाँ पे m जो आ रहा है नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा. So here along y-axis I am taking molar conductivity in Simon centimeter square mole,
Along x-axis we have the concentration raised to 1 by 2. And when you plot a graph for different kinds of electrolytes, strong and weak, strong electrolytes are those which completely dissociate when dissolved in water. Weak electrolytes are those which partially dissociate when dissolved in water, right? So when you apply this equation and plot the graph of variation of molar conductivity against concentration, see what happens. यहाँ पे देखो, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? अब यहाँ पे ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इतना है, ओके, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन 0.2 टू 0.4। अब क्या होता है, जैसे ही ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप वाटर ऐड करेंगे यानी कि डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है। अपॉन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, राइट, बिकॉज देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू विल डिक्रीज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उतना ही रहेगा, सिर्फ वाटर ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है सोल्यूशन का, उससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन देखो कम होते वक्त, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स यू हैव टू गो बैक साइड, व्हेन यू मूव बैक साइड कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। बट व्हाट इज हैपनिंग टू मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू, पहले मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे था, अब मोलार कंडक्टिविटी जब पीछे आएंगे यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, lambda m value is increasing, right? Why lambda m value is increasing is because upon dilution the undissociated electrolyte dissociates। जो भी अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, डाइल्यूशन के वक्त वो भी डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, इससे और आयोन्स प्रोड्यूस होते हैं और मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ते जाता है, राइट? सो दैट्स द रीजन, अपॉन डाइल्यूशन more ionization takes place, more ions are produced and hence lambda m value increases, right? तो इसको आप कॉन्सेंट्रेशन देखो ऑलमोस्ट नियरली जीरो हो रहा है, तो ये भी वैल्यू बढ़ गया। अब आगे, अब जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो इट इंडिकेट्स देयर इज नो इलेक्ट्रोलाइट, इस वजह से आपको ग्राफ यहाँ पे और नहीं मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रापोलेट इस ग्राफ को कर लेंगे, आप एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, राइट? So this will be nothing but the intersect, right? And that we denote it as lambda m naught, या फिर और एक टर्म यूज करते हैं lambda m infinity। This is called as limiting molar conductivity। What it is called? Limiting molar conductivity। When you are getting this limiting molar conductivity अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन को रीच हो रहा है, तो तब जो आपको मोलार कंडक्टिविटी मिलता है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, राइट? इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम नॉट, मीन्स मोलार कंडक्टिविटी एट नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और lambda m infinity means molar conductivity at infinite dilution, okay? So what is this limiting molar conductivity? Limiting molar conductivity 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं। limiting molar conductivity is molar conductivity at nearly zero concentration जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम नॉट से, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिनोटेड बाय लैम्डा एम इंफिनिटी। कोई भी दोनों में से एक टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, राइट? नाउ सेम प्रोसेस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करेंगे। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट?
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच पार्शियली आयोनाइज, एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लेंगे। अब इसको भी हम डाइल्यूट करते जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे डाइल्यूट करते वक्त इनिशियली देखो आप, जैसे ही डाइल्यूशन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। when concentration decreases you will find a sudden increase in the molar conductivity, that is there is an exponential increase, right? Means with the decrease in concentration, how the concentration will decrease? When you carry on the dilution process, upon dilution concentration decreases and molar conductivity we find here it is increasing। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन मिल रहा था यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ही इलेक्ट्रोलाइट अनआयोनाइज था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था। ऑलमोस्ट मैक्सिमम आयोनाइज हो जाता है, थोड़ा बचा हुआ जो भी रहता है वो आयोनाइज होने से आपको एक लीनियर वे में एक लाइन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ही आयोनाइज होता है, मैक्सिमम अनआयोनाइज रहता है। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो पूरा जो अनडिसोसिएटेड मैक्सिमम क्वांटिटी में जो अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट था वो डिसोसिएट होने से आपको शार्प इंक्रीज मिलता है। देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी, right? So when you go on diluting you will find that ultimately at nearly zero concentration this graph will become parallel to y-axis, it will not intersect here। अब यहाँ पे जैसा कि एक स्ट्रेट लाइन था, आप एक्स्ट्रापोलेट करके इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मालूम करें हैं, लेकिन इस डी बाई हकल इक्वेशन का ड्रॉबैक ये है कि आप उसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मालूम नहीं कर सकते, right? So for weak electrolytes you cannot apply this d by Huckel equation to find out its limiting molar conductivity, because its graph will become parallel to molar conductivity axis after infinite dilution, that is when you come to very high dilution or very low concentration, molar conductivity and concentration graph when you check for weak electrolyte it becomes parallel to मोलार कंडक्टिविटी एक्सिस, राइट? तो यहाँ पे इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो नियरली जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम नॉट वैल्यू या लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम इंफिनिटी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम कुछ दूसरा अल्टरनेट करते हैं, वी अप्लाई कोलरॉश लॉ, विल बी लर्निंग नेक्स्ट पार्ट हियर। सो हियर d by Huckel equation is applicable only for strong electrolytes, right? For weak electrolytes we apply Kohlrausch law। यहाँ पे और कुछ टर्म्स बाकी बचे हैं, जैसे कि मोलार कंडक्टिविटी हो गया, ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है, c कॉन्सेंट्रेशन है, एंड a is a constant। a is what? Constant। it depends on the type of electrolyte used, right? जैसे कि फॉर एग्जांपल if there is AB type electrolyte जैसे कि NaCl, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं 1 1 इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज चार्जेस ऑन कैटायन एंड अनायन आर 1 and 1, Na plus Cl minus। इफ आई टेक AB2 इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वी कॉल देम एज 2 1 electrolyte, because charge on cation is +2 whereas charge on anion is -1, 2 1 electrolyte। and if you talk about MgSO4, Mg +2 SO4 -2, they are called as 2 2 type electrolyte। तो ये इस कैटेगरी में जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं 1 1 टाइप, 2 1 टाइप या 2 2 टाइप, all will have their own A values which are constant, right? So A value depends on the type of electrolyte, for 1 1 it will be fixed, for 2 1 it will be fixed, and for 2 2 it will be fixed, right? So this is regarding how molar conductivity varies with dilution for strong and weak electrolyte। This question was asked for 1 mark। Plot a graph of lambda m versus concentration for strong and weak electrolyte, right? नेचर याद रखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देने दो आपको, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछते हैं तो इस तरह का आपको एक कर्व टाइप ग्राफ ड्रॉ करके एक्सप्रेस करना है।
वाई एक्सिस पे लैम्डा एम लिखना है और एक्स एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन या रूट ऑफ सी भी लिख सकते हैं आप, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस कोलरॉश लॉ। Kohlrausch law of independent migration of ions, right? Kohlrausch law of independent migration of ions. It states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of anions and cations of electrolyte. What this Kohlrausch did was he went on checking out the lambda m values for different types of electrolytes. जैसे कि example NaCl, NaBr, NaI, right? जहाँ पे common क्या है cation, right? Again he took KCl, NaCl, RbCl. Again you can find anion is common. When he went on checking this type of electrolytes where cation was common in a group or anion was common in a group, he found that there is certain similarities in the values of molar conductivity, and then he concluded that limiting molar conductivity of an electrolyte is not dependent overall on the electrolyte, but it is due to the contribution of individual cations and anions present in the electrolyte. यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन और अनायन रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन से ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का मिलता है, राइट। So based on that, he concluded and gave this law called as Kohlrausch law, which states that limiting molar conductivity of an electrolyte is nothing but is the sum of individual contributions of anions and cations of the electrolyte, right? Its mathematical form can be given like this: lambda m naught is equal to V plus lambda m naught for cation and V minus lambda m naught for anion. इसका मतलब होता है जैसे कि एग्जाम्पल V plus and V minus are the number of cations and anions. Lambda m naught plus and lambda m naught minus are their limiting molar conductivities. जैसे कि lambda m naught अगर आप NaCl का लिखते हैं that will be equal to lambda m naught of Na plus lambda m naught for Cl minus. It is suitable standard temperature of 298 Kelvin. We find out what is the lambda m naught for sodium ion and chloride ion. When you add up these two, you will get the lambda m naught value for sodium chloride, right? कोई भी electrolyte ले लो आप, जैसे कि acetic acid, you can write lambda m naught of CH3COO minus plus lambda m naught of H plus. इंडिविजुअल आयोन्स की अगर आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटीज मालूम हो गए, एड अप करो, आपको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो दिस द वे हाउ यू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग के लिए भी अप्लाई हो सकता है, वीक के लिए स्पेशली कोलरॉश लॉ अप्लाई करते हैं, राइट। कैपिटल लैम्डा है और ये आयोन्स के लिए हम स्मॉल लैम्डा यूज करते हैं, ओके। Let's see what is the use of this Kohlrausch law. First important use is we can determine the limiting molar conductivity of weak electrolytes, right? अब जैसे कि हम प्रीवियस ग्राफ में देखे थे पोटेशियम क्लोराइड, आप ग्राफ ड्रॉ करके उसका डी बाय हेगल इक्वेशन अप्लाई करके उसका लैम्डा एम नॉट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा था, ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जा रहा था, जिससे लैम्डा एम नॉट वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मालूम करना डिफिकल्ट है। तो उस टाइम पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या करेंगे, कोलरॉश लॉ अप्लाई करेंगे, कोलरॉश लॉ अप्लाई करेंगे,
राइट। अब कैसे करेंगे, से फॉर एग्जांपल लैम्डा एम नॉट आपको जो है एसिटिक एसिड का मालूम करना है। एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, right? According to Kohlrausch law, how you write this one? We write lambda m naught acetate ion CH3COO minus plus lambda m naught H plus। अब आपको जो है एसिटेट आयन और H प्लस का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मालूम नहीं है, आप एक लिस्ट देख सकते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं रहते हैं, वो देख के आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें ये आयन्स प्रेजेंट हैं, उनके वैल्यूज मालूम भी है तो आप सूटेबल फॉर्म में ये लॉ अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, I will take here lambda m naught of सोडियम एसिटेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आप डी बायहेकल इक्वेशन से लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस विल टेक लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl। वी नीड एसिटेट आयन एंड H प्लस आयन, तो एसिटेट आयन इसमें है और H प्लस आयन इसमें है। आपको सोडियम और क्लोराइड नहीं चाहिए, राइट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl, राइट। अब ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, सिर्फ आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये रिलेशनशिप पे आना है, राइट। तो अप्लाई करो इसको, कोलरॉश लॉ क्या होता है, यू विल राइट CH3COO माइनस प्लस lambda m naught of Na plus, plus apply Kohlrausch law for this one, you will get lambda m naught of H plus plus lambda m naught of Cl minus। lastly NaCl के लिए अप्लाई करो Kohlrausch law, lambda m naught of Na plus plus lambda m naught of Cl minus, राइट। अब क्या हो जाएगा, प्लस Na प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस क्लोराइड माइनस क्लोराइड कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन, दैट विल गिव यू द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह सूटेबल फॉर्म में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। द अदर थिंग व्हाट वी कैन use in what way we can use this Kohlrausch law is to calculate dissociation constant. For weak electrolytes, ionization constant or dissociation constant denoted by K will be there. It can also be calculated by using Kohlrausch law, right? Now, when you talk about the dissociation constant, before dissociation constant, you have to calculate alpha. Degree of dissociation calculate करना रहता है, जिसको हम represent करते हैं alpha is equal to lambda m divided by lambda m naught. This relationship helps us in calculating degree of dissociation. Lambda m is equal to alpha is equal to lambda m divided by lambda m naught, where lambda m is molar conductivity, lambda m naught is limiting molar conductivity, right? जब आप अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे तो k कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है तो आप सिर्फ अल्फा वैल्यू बहुत ही कम है तो आप क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर c ले सकते हैं, राइट। Correct relationship is alpha square c divided by 1 minus alpha. If alpha is very less,
then you can take only alpha square C as the formula to calculate K, right? So this is regarding the variation of molar conductivity upon dilution, and the important is Kohlrausch law. In the examination, they will ask Kohlrausch law statement along with the mathematical form, and sometimes they can ask the uses or numericals are there based on this Kohlrausch law. You have to calculate the limiting molar conductivity of weak electrolytes in this manner. जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी देते हैं, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करना रहता है. ओके.